हमारी इंग्लिश लिसनिंग प्रैक्टिस वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। आज भी आपको एक न्यू इंग्लिश स्टोरी सुनाई जाएगी और फिर आपका टेस्ट होगा जिससे पता चलेगा कि आप कितने अच्छे से सुन पाए, समझ पाए। ये स्टोरी स्क्रीन पर लिखी भी आएगी और सुनाई भी जाएगी ताकि आपकी रीडिंग और लिसनिंग प्रैक्टिस दोनों हो सकें, और फिर स्क्रीन से हटा दी जाएगी और तब शुरू होगा आपका टेस्ट। सो स्टोरी को ध्यान से सुनना। वीडियो के एंड में आपको टेस्ट के आंसर्स मिल जाएंगे और तब मुझे कमेंट्स में बताना कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंग्लिश स्टोरी। There was an old owl who lived in an oak tree. Every day he observed incidents that occurred around him. Yesterday he watched as a young boy helped an old man carry a heavy basket. Today he saw a young girl shouting at her mother. The more he saw, the less he spoke. As the days went on, he spoke less but heard more. The old owl heard people talking and telling stories. He heard a woman saying an elephant jumped over a fence. He heard a man saying that he had never made a mistake. The old owl had seen and heard what happened to people. There were some who became better, some who became worse, but the old owl in the tree had become wiser every day. सो ये थी हमारी इंग्लिश स्टोरी और अब बारी है टेस्ट की। Where did the old owl live? A. Oak tree. B. Mango tree. C. Olive tree. D. Apple tree. What would the old owl do every day? A. Observe incidents happening around him. B. Sleep all day. C. Talk to people. D. None of these. When did he see the young boy helping the old man? A. Tomorrow. B. Yesterday. C. Overmorrow. D. Today. He saw a young girl shouting at her dash. A. Brother. B. Friend. C. Mother. D. Sister. What happened as the days went on? A. The owl spoke less and heard more. B. The owl spoke more and heard less. C. The owl stopped observing everything. D. None of these. What did the owl hear? A. News on a radio. B. Songs. C. Melodies. D. People talking and telling stories. He heard a woman saying that an dash jumped over the fence. A. Monkey. B. Alligator. C. Elephant. D. Giraffe. What did he hear the man say? A. He had never made a mistake. B. He had won a lottery. C. He had bought a house. D. He made a mistake. Some became dash and some became worse. A. Worst. B. Madder. C. Better. D. All of the above. What did the old owl become? A. Cruel. B. Shrewd. C. Capricious. D. Wise.
अब बारी है आंसर्स की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिल्कुल शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स आ चुका है, जिसमें मैंने बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक बहुत ही अलग तरीके से, मजेदार तरीके से इंग्लिश सिखाई है। एक वेब सीरीज की तरह कोर्स बनाया है। हंसते हंसाते आपको इंग्लिश के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ग्रामर के कॉन्सेप्ट से लेके सेंटेंस बनाने तक हर चीज समझ में आ जाएगी। इसमें आपको मिलेंगे 60 वीडियो लेसन्स, नोट्स मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, प्रैक्टिस ग्रुप है जिसमें स्टूडेंट्स ऑडियो और टेक्स्ट मैसेजेस में प्रैक्टिस करते हैं और कोर्स कंप्लीट होने पे सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसको ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप awwalenglish.com पर भी जा सकते हैं। अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल।